Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, नमस्कार कार्यक्रम में। और अब सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Sushma will be joining us shortly. In the meantime, here are the headlines. Key domestic stocks log marginal gains. Sensex closes above 60,100 points. Nifty settles above 17,750. Global stocks witness losses. Rupee closes at 81 rupees and 92 paise against the US dollar. And Brent crude hover around $82 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 61,000 अंकों के ऊपर और निफ्टी 17,750 के पार चला गया। रुपए की कीमत 81 रुपए 92 पैसे दर्ज की गई और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य लगभग $82 प्रति बैरल के आसपास रहा। और इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी आज की विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Sushma. Thank you, Rajesh. और लेते हैं आज की पहली खबर। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दिखाई दी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 60,100 अंकों के ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,750 अंकों के पार चला गया। दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट के बावजूद देश के दोनों ही शेयर बाजारों ने बढ़त दिखाई। सेंसेक्स 75 अंक यानी 0.12% की तेजी के साथ 60,131 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.15% बढ़कर 17,769 अंकों पर जा पहुंचा। The key domestic indices today logged marginal gains. The BSE Sensex closed above 60,100 points, while the NSE Nifty settled above 17,750 level. Both stocks were up, even as cues from global share markets were negative. The Sensex added 75 points or 0.12% to finish at 60,131. The Nifty at the National Stock Exchange also rose 26 points or 0.15% to end at 17,769. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended flat and the small-cap index added 0.2%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 17 firms rose while 13 fell. Among the gainers, Bajaj Finance surged 2.5% and Bajaj Finserv climbed 2.1%. IndusInd Bank rose 1.8% and Bharti Airtel gained 1.6% each. Among the losers, HDFC Bank plunged 1.5% and HDFC slumped 1.2%. Tech Mahindra fell 0.9% and Sun Pharma slipped 0.7%.
In sectoral indices at BSE, 16 sectors logged gains while 4 witnessed losses. The power index gained 1.5% and utilities surged 1.2%, while consumer durables fell 0.9%. The overall market breadth was positive as shares of 1,823 companies advanced, while those of 1,719 companies declined. A total of 107 shares remained unchanged. और विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 92 पैसे दर्ज किया गया। विश्व की 7 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 0.27% मजबूत होकर 101.63 के ऊपर पहुंच गया। Okay, we have Sushma with us. Sushma, today the domestic market succeeded in holding the gains, though multiple attempts were made by the bears to reverse the trend considering the weak global market. What made the investors stand firm on the ground? Well, I think the investors have stood firm largely because of domestic indicators. The domestic indicators of the earnings reports which have come in the last few days are better than they were earlier. Of course, last week the earnings reports of the IT majors were below expectations, but some other reports lately have been better of other corporates. But at the same time, I think one can expect some amount of volatility because the impact of global cues is there clearly on the market. You know, you could see it last week, and the concerns that recession could set in any of the developed economies, and the fears that the aggressive rate hike cycle will continue both in the United States and in Europe. These are the fears just now. And this has been, of course, reflected also in, a decline in crude oil, anticipating a lower demand. So there is, this impact on the market, which is bound to, I think you will continue to see it in the coming days. Okay, and do you think the investors are nervous as they await the release of the US GDP and the PSE inflation data, which will guide the upcoming Fed action? Yes, definitely, because these are going to be key indicators. Everyone is waiting for them for the GDP data, and so it is. It will obviously have an impact on what the US Fed Reserve goes on to do. So far, the statements made by Federal Reserve officials have given clear indications that they will go ahead with rate hikes, but much will depend on the data that comes through. लेकिन सुषमा, अगर हम भारत की बात करें तो काफी समय से ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे कि रिजर्व बैंक ने अभी पिछली बार भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी कि अब शायद ये जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर रुकेगा और शायद इसी वजह से शेयर बाजार भारत का काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। आपका क्या सोचना है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो बिल्कुल विपरीत जा रहा है बाकी सेंट्रल बैंक के ट्रेंड से। उन्होंने रोक लगा दी है रेट हाइक से, और हो सकता है कि आगे वाले दिनों में भी यही स्थिति रहे, क्योंकि उसके बाद उनके पॉज के बाद फिर देखा गया कि जो इन्फ्लेशन है वो काफी कम हो गया। मार्च के जो आंकड़े आए थे वो मेरे ख्याल 5.6% थे, तो 6% से कम था जो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर है। और दूसरी बात यह है जो हमें मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस साल नॉर्मल मॉनसून आएगा, उससे भी अच्छी इसका मतलब है कि अच्छा आउटलुक है डिमांड के लिए आगे वाले दिनों में। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं इससे लगता है कि, और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उनके भी अच्छे रिपोर्ट्स आए। हालांकि जैसे मैंने कहा आईटी कंपनीज के जो आंकड़े आए थे वो इतने
अच्छे नहीं थे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे, लेकिन बाकी जो आंकड़े आ रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, वो तो अच्छे ही है। तो जो नेगेटिव जो क्यूज जैसे मैंने कहा वो बाहर के देशों से आ रही है। So Sushma, do you think that the liquidity tap is again opening up by major central banks globally as the fallout of the banking crisis in the US and Europe is showing its effect? Yes, of course. Well, it showed its effect in the in the high inflation, and that is something that has been quite sticky in some countries. But in the United States, it has been, by the way, coming down. In fact, I think it is now probably around 6%. But in other countries, it has not come under control so easily. But even for the U.S., the 6% is not a desirable level for them as it is for us. For them, about 2% is a desirable level, and that is where, as a developed economy, they have to continue in this direction. And of course, it was anticipated at the time of the Silicon Valley Bank collapse that the Fed would take a pause because there was a lot of criticism about the impact on bond yields of the higher interest rates. But that the indications given by Federal Reserve officials are that this is not likely to impact their decisions, and their focus is completely on inflation just now. So it's a tricky one that I'm asking you. You mentioned that the easing of liquidity conditions by central banks in the US and Europe to limit the contagion in the banking system has it led to the risk on trade across equity markets globally? Sorry, has it led to? Risk on trade. Yes, I guess so. You do have this is the problem that is in equity markets would be facing right now, and the problem is that central banks just now cannot they are faced with multiple problems around the world. They are faced with high inflation. They are faced with lowering of demand. There are recessionary tendencies. So as of now, like the Federal Reserve, they would like to focus only on the interest rates, on inflation rather, and that for that end they are going to continue. These are the indications coming not just from the Federal Reserve but from other countries as well, central banks of other countries. सुषमा जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इक्विटी मार्केट में काफी पैसा डाल रहे हैं। इवन डेट मार्केट में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड है जिस तरह का ट्रेंड हमने पिछले वित्त वर्ष में देखा। तो आपको क्या लगता है, अभी जो दुनिया के बाजारों की हालत है, क्या ये जो विदेशी निवेश है भारत के इक्विटी बाजारों में, ये जैसे अभी 3 हफ्ते से ट्रेंड देख रहा है, ये चलता रहेगा कि इस पे कुछ रोक लगने की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, जो ट्रेंड आप बता रहे हैं वो जरूर चल रहा था अभी 3 हफ्ते से, लेकिन अभी कुछ दिनों से 3-4 दिनों से ये दिखाई दे रहा है कि FIIs अपना पैसा निकाल रही हैं। वो फिर से थोड़ा सा विड्रॉल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक की जो आपने कहा था बिल्कुल ठीक था। FIIs की जो पॉजिटिव ट्रेंड थी वो बहुत ही अच्छी खबर थी हमारी इक्विटी मार्केट्स के लिए, और हो सकता है कि ये अभी जो मैं कह रही हूँ कि अभी 2-3-4 दिनों से विड्रॉल चल रहा है, सेलिंग चल रही है FIIs की, शायद ये टेम्पररी फिनोमेना है और आगे फिर से वो वापस आएंगे। Sushma, we talked about FIIs just now, and it seems they would like to return to India, and the selling quantum from them has gone down. What is leading the change? And they are showing a lot of interest in small and mid caps
in the March quarter, which actually incidentally underperformed in FY23. So what is fueling this optimism? Well, fueling the optimism is simply, I think, that India remains the fastest growing economy in the world. Even though by our own more ambitious targets, we are not yet out of the woods. We look at it as a rather fragile economic recovery, but we are still at 6 or 6.5%. We are still the fastest in the world. And for the next financial year, the anticipation is that we will grow definitely faster, because I think 23-24 there is expected to be a decline compared to the previous year, and then there will again be a spurt in growth in 24-25. So the outlook is good, and just as I had said, that the domestic indicators, all the major economic indicators. Now, for instance, the most important for India at this point is getting a normal monsoon, a monsoon that is spread evenly throughout the country. That the IMD is saying that we are going to have a normal monsoon. That's a very positive indicator. Then, of course, there are all the other things that we have talked about in the past. The GST, collections have risen to record levels. Petroleum product consumption has gone up. So these are all indicators showing that the economy is getting back to normal. And we're talking about the FIIs. The FIIs are also looking at this as an economy that is not heading towards recession. Unlike the rest of the world, there are no recessionary trends in India so far. So definitely these are the factors that they would be looking at when they are coming back and investing here. सुषमा, जो मौजूदा हालत चल रही है, जैसे आप चर्चा आपने की अभी, कि अगर फेड रिजर्व भी रेट हाइक करता है और भारत में भी रिजर्व बैंक भी अगर रेट हाइक की तरफ जाते हैं, तो इसका अगर हम कुछ खास क्षेत्रों के बारे में प्रभाव की चर्चा करें, तो बैंकिंग क्षेत्र पे या आईटी क्षेत्र पे या टैक्स सेक्टर पे इसका किस तरह का असर आप देखती हैं? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तो कुछ खास असर होना नहीं चाहिए अगर रेट हाइक हो, खासकर अमेरिका में. यहाँ पर अगर रेट हाइक होगा भी तो मामूली होगा, 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा. तो बाकी आईटी सर्विसेज का इसका असर तभी होगा जब रुपये की अगर अप्रिसिएशन होगी. आईटी सर्विसेज क्योंकि वो निर्यात करती हैं अपनी सर्विसेज, तो उनके लिए तो फायदा है अगर रुपया की डिप्रिसिएशन होती है, तो उनको ज्यादा फायदा होता है उससे. तो मेरे ख्याल में इस जो रेट हाइक से इस वक्त ज्यादा असर नहीं होगा. हाँ, हालांकि एफआईआईज का जो अभी आने की उम्मीदें थी और हो रही हैं, शायद वो विड्रॉल शुरू हो जाएंगी. Moving on, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has underlined the need to make e-commerce as the engine of India's growth without damaging small retailers. The minister was addressing the inauguration session of the Open Network for Digital Commerce's Enabling Bharat 2.0 in New Delhi today. Mr. Goyal said there is a problem arising out of the predominance of big tech companies in the e-commerce space and also a serious challenge to small retailers across the country. He said, although e-commerce affects only 3 to 4% of India's retail trade, but the policymakers will have to think about it and find a solution. Sushma, very briefly, this seems to be a good move to protect the small retailers. Sorry, I didn't quite hear the news item clearly. Can you just repeat a little bit of... we will go ahead and ask you about some other story. Union Minister Dr. Jitendra Singh today left for London on a 6-day visit. The minister is visiting as the head of a high-level official Indian delegation. He is scheduled to hold a series of meetings with his counterparts in the government of United Kingdom as well as with the Indian diaspora, startups and academicians. This will be the first visit of this kind after the new government headed by Prime Minister Rishi Sunak took over in the United Kingdom. What are your expectations from this visit, Sushma?
I think the first thing is that, of course, India and the UK are looking at a free trade agreement, and I think these are bound to be a lot of issues that are going to be taken up. Of course, the free trade agreement has been delayed because the sticking point, one of the sticking points, of course, is the movement of professionals, which India has been seeking, and the easing of visa restrictions from the UK. So these are issues that are likely to be taken up, and I think that those would be the key issues. As far as other products are concerned, I think there are there is some realization here that perhaps we will have to provide greater market access, perhaps to things like wines and spirits and things like that. So there has to be some give and take at the end of the day. सुषमा, जैसा कि राजेश जो खबर पढ़ रहे थे, हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल के बारे में, चूंकि उन्होंने कहा है कि जो ई कॉमर्स है वो भारत का एक तरह से ग्रोथ इंजन है, भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और ये जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये काफी अच्छा कर सकता है, और जो प्रीडोमिनेंस है, जो उनका बड़ी टेक कंपनीज हैं उनका जो वर्चस्व है उसके बावजूद जो ई कॉमर्स स्पेस है वो काफी बड़ा है, और इससे जो रिटेलर्स हैं उनके सामने भी एक चैलेंज है। तो आप क्या समझती हैं कि जो पूरा जो डिजिटल कॉमर्स है या ई कॉमर्स का जो पूरा एरिया है वो किस तरह की संभावनाओं के द्वार खोलता है? देखिए, एक तो हमारा इतना बड़ा, हमारा जो वैसे ही फिजिकल रिटेल जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, हमारी किराना स्टोर्स की जो नेटवर्क छोटे छोटे दुकानों की बहुत बड़ा है, और ई कॉमर्स जैसे आपने ही कहा है कि सिर्फ 2-3% में रिटेल क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए कई जो क्षेत्र हैं, जैसे बहुत छोटे उद्योग, बहुत छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपना काम अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उनको कोई जगह लेने की जरूरत नहीं होती है, मतलब उनको जगह लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपने घर से ही काम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत छोटे टाइनी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मेरे ख्याल में इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे रिटेल क्षेत्र बड़े। It seems, Sushma, we are creating an open network for digital commerce. Yes, so that is the open network for digital commerce will definitely be useful for all entrepreneurs who are trying to come onto this platform, and for those who are on the physical space, they can also come on the digital platform. This is a great development. जी, और सुषमा जी, एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज गिरावट दर्ज की गई, हालांकि जापान का निकेई 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 1.7% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.4% गिरा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान गिरावट का रुख रहा। लंदन का फुट्जी 0.2% और फ्रांस का कैक 0.6% गिरा। जर्मनी के डेक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। सुषमा जी, क्या आप कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगी एशिया और यूरोप के बाजारों का जो प्रदर्शन रहा उस पर? देखिए, यूरोप और एशिया के बाजार में जो हुआ है, जो गिरावट हुई है, वो मेरे ख्याल पहले मैं बात कर रही थी कि इस वक्त जो डर सा बैठा हुआ है कि अभी यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेंगे अगर उनकी रेट हाइक होगी, और बाकी जो सेंट्रल बैंक्स यूरोप में उनकी क्या मतलब उनका क्या रवैया होगा आगे वाले दिनों में, उससे थोड़ा सा डर बैठा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आगे जो अमेरिका का जो इकोनॉमिक डेटा आने वाला है उसको भी थोड़ी सी
मतलब apprehensions हैं कि ये क्या कौन सा कि GDP इनका एडवांस GDP ग्रोथ डेटा की क्या इम्पैक्ट होगा। और तो ये सब चीजें हैं। और तीसरी बात ये है कि अमेरिका में जो सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हैं और कुछ और हैं, उनकी अभी क्वार्टरली उनकी अर्निंग्स डेटा आने वाला है, तो उसका भी असर होगा मार्केट के ऊपर। तो ये सब चीजें जो है जिससे मार्केट थोड़ी सी हिली हुई है, ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में इसके ये जो डेवलपमेंट है इनका असर क्या होगा मार्केट के ऊपर। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में। और Also, the U.S. stocks closed mixed yesterday. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2% and the S&P 500 added 0.1%, while the Nasdaq Composite fell 0.03%. Sushma, very, very briefly, do you expect the Fed to raise the interest rates by another 25 BPS in its announcement on May 3? Well, I think it looks... You have no choice. Stands very clear, so I think probably it will. Okay, moving on, the oil prices today fell around 1% in intraday trade. Brent crude was trading at around $82 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading down at $78 per barrel when reports last came in. So, do you think, Sushma, the investors are now optimistic about the holiday travel in China, and that is going to boost the fuel demand, and also by expectations that the U.S. inventories would show a drop in crude stocks, therefore the rate oil prices, in which direction will they go? Well, in the short run it seems to be going downwards, and this is as I had expected, that the inventories of course may have come down, but there's still considerable availability of crude, and also there is the same fears which I had talked about earlier, the fears that recessionary trends around the globe are going to ensure that demand will be reduced and there will be excess output despite the production cuts being done by OPEC Plus on April 2nd. So if there is excess crude available, then obviously prices will go down. But in the longer term, in the medium term perhaps, you will find a more bullish trend. So also we are going to be getting the Russian oil much below the Brent level. This is going to help us further. Yes, we are already getting it below the Brent level, and the Urals crude of course is very much cheaper. But for India, even so, still a large amount of our crude comes from the rest of the world, and there we will have to pay the higher prices. जी, और चलते चलते सोने का हाल भी जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने का मूल्य जून के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 200 रुपए गिर गया। 10 ग्राम सोने का मूल्य 59,800 रुपए दर्ज किया गया। चांदी भी मई अनुबंध के लिए 1,315 रुपए की गिरावट के साथ 73,680 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,989 और 20 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी दिन भर के कारोबार में नुकसान के साथ $24.80 प्रति औंस पर दर्ज की गई। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी सोने के मूल्य में जो स्थिति? वेरी ब्रीफली सुषमा। सोने के भाव तो बढ़ ही जा रहे हैं, वो सेफ हेवन एसेट है, और पिछले साल से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी वजह से काफी सोने के ऊपर असर पड़ा है, उसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, इतना उथल पुथल। जी, तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for being with us, Sushma. And before we close the headlines once again, key domestic stocks log marginal gains. Sensex closes above 60,100 points. Nifty settles above 17,750. Global stocks witness losses. Rupee closes at 81 rupees and 92 paise against the US dollar, and Brent crude hover around $82 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market
Market Mantra.